Hello, good evening, everyone. My name is Ashutosh Thakur, and I am a management associate lead at MLSC BSIOTR. I am interested in web domain side, and it is my pleasure to introduce. I am very thrilled to have here today to hear our speaker, and he will share us some experience overall his journey. And it is my pleasure to introduce our speaker, Mr. Shradul Imanda, sir. He is a highly skilled software engineer at Red Hat who has a wealth of experience in the field of Java programming and and Google Cloud. Their expertise extends beyond their areas as they have also built chatbots and worked with the Flutter frameworks with a keen eyes of automation and process improvements. They have helped team automate internal workflow, streaming processes, and increasing productivity. Not only a speaker and expert is a not only a speaker is an expert in their field, but they are also passionate about the knowledge sharing and community building. They collaborate with various groups like Flutter Pune and shared their expertise and insight with others. He also contributed in our GDG, that is our Google Developer Pune Club, and he is very dedication in building a stronger communities, and and we are very excited to have him here. So a warm welcome. So let's warm welcome to our speaker, Mr. Shradul sir. Mr. Shradul sir, over to you. Thank you. Thank you, Ashutosh, and hi everyone. Good evening. I hope I am audible to everyone. Yep, Ashutosh, can you confirm if you are able to hear me? Yes, sir. Yep. Okay. So, what's up? Let's start then. Uh, what I'll do is I'll start by sharing my screen. Okay, this is not something I have to show. Yeah, this is something I want to show. So, is my screen visible to you guys? Hello. Yes, it is visible. Yes, sir. Looking at the presenter mode, yes. And now, yes, this is something I want to show you guys. So before we start, I want to make this session as interactive as possible, because without that, neither you would understand something nor I would get the feeling of having communicated something. So I want you guys to jump in, hop in, put it in comments, unmute yourself and say something anytime you want. I want to make it as interactive as it is possible. So is that a yes or no? A quick Someone can quickly unmute themselves and say yes or no for this. Yes. Yep. Apart from the hosts, I would request the attendees to speak. So like it would be a bit better for me to understand you guys. Also, before we start, can you guys tell me? So I guess let's start then. Let's not waste more time. Yeah, let's go. So who am I? I'll start with my introduction. My name is Shardul Inamdar. I have done my engineering in from 2018 to 20. I'm a recent pass out. I'm a 22 pass out. I did my engineering from VIT College. You might know Bibbewadi one. So I did my engineering from there. I did my engineering in instrumentation engineering, total hardware branch, nothing software at all. Okay. I have 2 years of experience in software development. I'll tell you how I have 2 years of experience. So like how I actually started my job in 2021 itself. So before I was a graduate, I had a full-time job in my hand. So that's how I have these 2 years of experience. Apart from that, I'm also a part of GDG Pune and Flutter Pune, something that I do at the site. And I currently work. Where do I currently work? I currently work at a company called Red Hat. You might have heard of White Hat. So similarly, none of that is related to White Hat Junior. So we have a company called Red Hat. So you might have heard of Red Hat certifications, Red Hat Linux, Red Hat Ansible, OpenShift, anything and everything that is open source is Red Hat.
So I belong to an open source company. I'll talk about it, what type of culture we have at Red Hat, what is open source, how do we contribute to open source. And that is the only good photo of me that I could find to put up here. And apart from all of this, one thing that I really love the most is teaching. Um, this is something that I have got it in my family. My dad is a teacher. He used to teach, so naturally it came down to me. So until now, I have taught almost around 500 plus students in my college. I take personal tuitions. I teach students personally. So until now, I have taught people coding, machine learning, application development, web development, Git, career guidance, resume reviews. I've done all. And at the end of it, that's why I've come to you guys now. So when they asked me, would you be interested in coming and sharing your experience? And I was like, hell yeah, I want to come there. I want to tell you guys what I did, which worked for me, and what you should do. Because now what happens is I meet a lot of students, and the problem with them is they don't have any seniors to guide them. So that's why I want to be that senior who comes to you and guides you on what needs to be done at the right time. गौतम म्हणून काढून दिलं इथं त्यांची आई झाली फार आता. Does anyone want to say something? No. Okay. So that's how I landed here. So before that, so before we start with the main thing, let's go on with my journey, how I did it. So see, our main topic for today is cracking product based. So until now, does anyone have any doubts? I want to quickly yes or no. Any doubts? Someone wants more information from me? My UPI ID, my bank number, age, address, anything? This is enough. Am I audible, Dev? Yes, you are. Guys, you can use a chat system if you are shy and if you are aren't able to unmute your mic. If you are unable to unmute your mic, please let me know in the chat section so I can give you access. Okay, guys, please be interactive. So cool. Okay, Ganesh is telling you, Shardul want a little louder voice. Okay, you want a little louder voice. Is it better now? Yes, yes. Yep. Okay. So should we go ahead? Yes or no? Quick yes or no? Yes. Looks good. So let's move on to the next slide. What is my journey? Okay. So before coming on to how to crack the product based company and everything, I don't want to cover only one aspect of it. So before going on, I just wanted to highlight what my journey has been until now, how I started my engineering, what went through, what all I was a part of. So first thing that I want to clear is you can't crack a product based company in a year or a month. Okay. What you do throughout these 4 years or 3 years, 2 years, 1 year, I'll give you a detailed plan for that as well. It is not a single day's effort or a single month's effort or one interview call and after that preparation to crack a product based company. Okay, you have to start, or it is a series of steps that you need to do right from when you get into the college. So I'll start off with what it has been for me. How did I progress through all those things? What each of these things taught me? And in the end, how will it help you to crack that product based company? Okay. First thing is engineering. So I guess yours is an university based college, right? So I did my I did my engineering from VIT Pune. So VIT Pune is in Bibewadi, and the branch that I was enrolled into was instrumentation engineering. So why that non-tech? Because I come from a non-tech background. When I joined college, I had zero, like when I joined college and when I started instrumentation engineering, that's when I got to know कि यार गलत जगह पे आ गए हम लोग. This is not something, ये अपने से तो नहीं आने वाला है. When these people started teaching us control systems, sensors and transducers, electronics and some heavy electronics, op amps and everything, I don't even remember the names now. I was that bad at it. I had no clue how to grasp those things. So I was like कि यार ये तो नहीं होने वाला है अपने से.
At the same time, what I did was I started coding, or I fell into, I got my hands into coding. And before that, I want to clarify that engineering wasn't my choice at all. I wanted to become a bloody doctor. And I somehow, that plan didn't work out, didn't get the marks, and engineering was the second choice for me. So somehow things fell in place, got a good college. So so coming to first year, so how did it start? So coming to first year, so in engineering, so what I did was in my first year, I started coding. Um, Much unlike you, during our times, around the time of 2018 or something, we only had C, Python, C++. So I started with C and Python, basic languages, and something that very Shardul, I guess someone muted me. Great. If you want me to stop at any point of time, let me know. I just dropped the meeting. You don't need to mute me. Yep. yeah, I have the access. Don't worry. I'll change the settings. Nana, No worries. Nana, let me know. If you're getting bored at any point of time, let me know. Even I have some really work to do. Okay. Yep. So coming down to engineering. So my engineering journey of 4 years was basically doing something that is not in my scope. Okay. If you want, I'll tell you how if you are from a non-tech branch as well, I'll tell you how to pass those other subjects as well. During these 4 years, I have a good amount of tricks in my bag on how to tackle each and every subject, so I can share that with you as well. Second, so what engineering did for me was, or my engineering journey in general was that, it was very learning, like it was very rich in learning. um, some good professors, but I'll come back to that. Second is clubs. Uh, I feel that each and every one of you should go and become a part of club. So I'll tell you my club journey. So when I was in my first year of engineering, um, uh, so this is what I believe in. What I believe in is you should always start with what you can and then do what you want. That means there might be hundreds of, like not hundreds, say many clubs in your college. You might not be suited in every club. Or let's take Microsoft Club for an example. Okay. So you might have this club wherein there would be an open position for web developer or Android developer or let's say anything. But in my first year, I didn't know a thing. So what I did was I joined into something that was my expertise, or that I could do, or that someone could do very easily. That was marketing. So I started with marketing, and that's how I entered one particular club. That was a DSC club. So that was, oh sorry, that was a Trident club. So and then I started developing those skills. But I didn't sit ideal for one day. I was a part of any club at any given point of time. So, but second thing that I did was, um, you might have heard about the developer student clubs, right? I don't know if this is the right place to speak about developer student clubs, but yes, something run by Google. So when the forms for developer students club came out, I instantly applied to it. So there were four sections: Android, web, marketing, and some multimedia. I was like, photos तो मैं अच्छी नहीं खींच लेता हूँ, मार्केटिंग मैं कर चुका हूँ. I have two choices: web, Android. Web उतना अच्छा नहीं लग रहा है, जावा मेरे को थोड़ा सा आता है, तो let me go for Android. So that's how I went for Android, and I blankly went for the interview. I had never run an Android studio in my life. Before going, I just ran it for once, देखने के लिए कि वहाँ पे बताने को तो आना चाहिए कि हाँ Android studio है लैपटॉप में. I'm learning. So went in, sat for the interview, told them what I have done until now. I had done some pretty good ML projects until then, and then I went ahead and somehow they thought ki I'm a good person to bet on, and then they selected me in Android and trained me in Android. But the most important thing for you to understand over here is that if you want to crack good companies, you will need to be some parts of club wherein you will experience that atmosphere of working with people together. It can't be that you directly go and join a company and then start experiencing that corporate life or working in groups. You need to be a part of club, so in to understand what type of people you can interact with, how to interact with people, how to speak, how to code, all of those things. So for clubs, my advice would be join
any random club in college. This doesn't mean you go and join any art and craft club or anything. Join any technical club that you want to. Okay, join a club which you think will suit your journey. Okay, looks good until now. Any doubt until now for what I have shared? No. Nope. Cool. Coming to the No. next. No, coming to the next part, that is internship. Now, in my life, I have done almost like 4 internships until now before joining Red Hat. Okay. Now, why are internships important before joining any company? Is if you look at the process of the selection of a company, there is something known as a resume, which you all might have heard of. So in your resume, you have to put in your experience, and you must have some experience before you go into a product based company. A product based company will not bet on you if you haven't proved your worth on any of the smaller companies. Similarly, when I hire for Red Hat, so I take interviews for my team in Red Hat. Recently we hired 2 interns from a college, and during that hiring, what we looked for in particular was internships. We didn't look for any other thing. We wanted people who have worked somewhere, proved their work, and now they have come to a higher level wherein they want to contribute to a bigger organization. So if you want to go in a bigger organization, you need to start small. It always starts with zero. So you will have to do internships into good startups. Okay. So additionally, so when I talk about internships, I also, it is my personal theory कि you should never do an unpaid internship in your life. Okay, because if the startup because if the company doesn't even have any money to pay you, that is not a good company to work, or the culture of the company is not good. So internship is something that you must do. When do you do an internship? How to apply to it? I'll come to all of that later. But what my experience of internship was, I interned at almost like I interned at 4 companies. All of them were startups, different technologies, different problem statements that yep, that's the right thing. If you're good at something, never do it for, or I would say, right, what my theory is, never do anything for free. Okay, get something in return, because your time is not free. So internships, um, I did 4 internships. Those were 4 startups, different domains. And how did I got those internships is something I'll come later. Okay. So how did I get those internships? Okay, I'll come to now only. Only one thing, network. Okay. So what I see now is the maximum number of internships that you can get right now, or in your journey you can get, is through your networks. You need to have a very good network wherein you can go to a startup co-founder and say ki yaar, I'm like, you are working on something really great, these are my skills, I want to come and contribute to you. Okay, what should I do? Can I join you? I want to interview. Okay, and like, don't even think will I pass the interview, will I crack the interview. Just go and show up. What will happen? You will get rejected, that's it, nothing else. One more question which I get asked is, how to do college with internship. So I was lucky enough that during my time, uh, it was COVID lockdown, so all my lectures were online. So it didn't really matter to the teacher what the student was doing at home. So that is not the case with now. So what I tell, or what I advise to my mentees right now is, always do an internship with your college. It would be the best. Okay, let's say you have 5 or 6 lectures, let's say you have 5 or 6 lectures in your day. Do those lectures, wake up early. You have 5 to 6 hours. Okay, apart, like, you have almost like 8 hours of college. You should be able to take out 2 to 3 hours of your time daily to go to that internship. Now if the startup is good, if the startup culture is good, the startup would easily allow you to work on your own terms, just tell you what work needs to be done and get that work from you. Okay, so all my internships that I have done have been when I was a student, when I had college in place. So don't be of an thinking key. Once I finish this semester, I'll do an internship in my summer, I'll do an internship in my winter. That doesn't happen. You need to intern while you are learning. Okay. You get that flow of money, you get to spend that money, you get to learn, you get to apply, you get to network. So internship is something that you have to do at this point of time. Third thing,
how to crack the so we covered how to get the internship. We covered how to manage that internship as well. Third thing is learning. What do you learn from an internship? So what I learned from an internship was when you do some projects in college, it is a shit level of coding that you do. Okay, you guys don't even know how to declare a constant, let's say, or how to name an variables. Okay, or now when I meet people, they don't even know what a git is in their first year or second year. So when you join an internship, or when you do an internship, and when you join in startup, these people will mold you guys for free, almost free. Okay, because you don't have to pay anything to them. You get paid for learning in a startup while doing an internship. Those people will make you sit. They will explain to you A to Z of software development. What is Git, how to write a code, how to push a code, how to deploy a code, what all things are needed to be done as a part of everything, CI/CD pipelines. These guys will teach it to you for free of cost without anything. They'll pay you for for learning. So what else do you want? So before you go into a product based company, your base would be really strong. So when I joined in my company, before joining the company, I knew everything: what Git is, what agile processes are, how to code, how to write a code, how code reviews are done, each and everything. So the time that my company needed to invest on me was very less, and that is what product based companies want. They want people who are already groomed. They don't want to put in extra efforts for you to come and groom them. So that's why internship becomes a very important part of uh, your journey. Any doubts until now? Looks good. Any doubts on some things that we have covered? Nope. I need 4 or 5 more no's to go forward. Okay. No, sir. No. Looks clear. Yep. Looks good. So next thing, startup. So I've not publicly said this until now, but yes, I did start a startup in my second year. And this is like this one quote by Kunal Shah, the founder of Cred, that every student must start a startup in his or her college journey, because a startup is something that will drive you like anything. Okay, so I started my startup in around second year. That was something like a person approached me ki, I have this idea, can you work on it? I was like, yeah. So we started working on it. We got incubated to an incubation center. And why this startup journey was really important for me was this startup journey was taught me how to be presentable. Okay, or how to think from an employer's or from a user's point of view. So when you develop projects, let's say in college, you only think from your point of view, which is the easiest technology for me. Or there is this one word jugaad. You just do the jugaad, get the output, done with it. That is not something how a startup works. Startup is always user centric. It is always about the users. So when you do and start, so when you get into the startup zone, you start thinking from the user's point of view. You start understanding the user psychology, what works for people, how do people think. That is something that people really need to understand. If I'm developing one feature, how will my user come to a screen and think? What would his psychology be? What if what should my button be located towards the left or right? How should my user flow be? How many number of buttons? How many number of text field? A startup will help you to understand that user. It will basically help you understand ki bikta kya hai. So if you want to go into a product based company, you need to understand your product from start to end. You need to understand, if I am developing a website, what is the psychology of a user that is going to come. And I personally feel it is the best if you can understand that psychology before coming into a product based company. I told this to my interview. I have been a part of startup. I started a startup. I know how a user interacts. I know what a user thinks. That keeps in a lot of weight. So no matter your idea is shit, okay, it doesn't matter what your idea is. Just start something. Okay? Get your friends. One more thing that is very important while starting a startup is you get to convince people. Okay. So I interacted with a lot of folks, and when you go in and pitch in your idea to a lot of people, you get to understand
how people interact with that particular thing, what needs to be done, what doesn't need to be done. So that is why a startup is really important. I feel ki every student in his life, in his student life, should be a part of something that solves a bigger problem. Okay, it doesn't matter if it doesn't work out, okay, but trying is important. That process in itself will help you understand ki how companies are made, okay, what goes into a company. You might just go and join a company, but what that co-founder has put in place through his entire journey is something you need to understand. You need to understand the user, you need to understand the co-founder, you need to have, or you need to work on something which will keep you up at night, which won't let you sleep. So that is something a startup will give you. And additionally, what this startup will also do is it will again help you network a lot. Okay, so when you go in with your idea to people, people will listen to you, people, you get to meet more people. Okay, so that is why I think you should do a startup in your student life. Next thing is coming on to is my corporate life or my corporate experience, let's say. So I started my so when I joined Red Hat on in July 2021 as an QE intern. Okay, and so my journey was I first started as a QE intern. So since I was from a non-tech branch, I thought QE would be a good starting point for me. Again, start with what you can, do what you want. So I started with QE. I started contributing to QE. I was into manual testing. I was into automation testing. And that period of 5 to 6 months actually helped me to understand how a user thinks. So a primary, so how many of you know what a QE is? Can someone quickly raise his hand or unmute himself and tell me what QE stands for, what QE is? Anyone? No one here knows what QE stands for or what a QE is? So let me start by taking random names then. Who do we have in the chat? Let's start with Kranti. Kranti, do you know what a QE is? Dev, are these people able to unmute themselves? Yes, yes. Anyone, can you please unmute yourself and tell me what do you think a QE stands for? Yeah, they can unmute themselves. Yes, Okay, any you Linear can data take a name. structure. Yeah, Soil. that's Q, sorry. Yeah. Anyone else? Anyone, come on. Believe me, those Soil, who you are answer. talking Linear. something, right? Nah. Yes, go ahead, Soil. Yeah. Go ahead. Linear data structure. So I didn't mean Q as in QQ. It is capital Q, capital E, QE. Okay. I think quantitative easing. Sorry. Quantitative easing. Nah. So QE is basically quality engineering. So quality engineers, basically what they do is developers write the code, quality engineers test those code before it goes on to production. It is a part of an SDA, software development life cycle. Okay, so I started my corporate life as a QE, that is quality engineer. So my basic job into that QE was to test the code that comes in, test the features, write automation test suites for them, and then I slowly shifted on to the development side. I thought this QE experience was enough, but I wanted to contribute to a larger goal, like larger cause. As in, I thought developer is something that is more suited for me, so I shifted to the dev side of things. And at the end, coming on to mentors. So I say this without any doubt that whatever I am today is because of my mentors. I had my mentors in so my mentor, I won't take his name here, or let me so my mentor, I'll give you his name. His name is Afan Sheikh. So you can go and search him up on LinkedIn. He's a pretty famous guy. So he was the one who guided me from start to end. So he was the one who taught me that you need to dream larger.
your goal should not be a company like TCS or Wipro or Persistent for that matter. He always emphasized to us that your target is not the lowest, your target is the highest. So he himself is in Amazon now. So the level of guidance that he gave us was that you need to crack those product based companies. If you go into service based companies, your life is a hell. Never ever aim for that. So he taught me um, so he basically taught me how to code when giving an interview, how to write a code. If the interviewer asks you coding question, how to approach that question, what to learn in DSA, what not to learn in DSA, how to go about answering every question in interview, how to give a resume. All these source of my knowledge comes from him. So for all of you, the advice that I have for all of you is find such seniors around you. These people will help you at each and every step of your life, not only professional, in personal life as well. But these people who have experienced the professional life will help you. So my suggestion is go and find these people around you. If you don't find anyone, message me. I'll help you guys whenever it is possible for me. So out of the until like so for the next 30, so for the last 30 minutes, my basic so what I wanted to communicate with you was number one thing, you need the preparation for cracking a product based company doesn't start from your third year, it starts from your first year. Second thing, you need to be part of all the clubs because these clubs will help you to go ahead and uh, like to interact with more people or working in groups. Third thing, you will have to do internships because if you don't do internships, there is no question of cracking a product based company. Fourth, if possible, if you want, go and start a startup, explore world, go meet more people. Then my corporate life, and at the end, mentors. Find good mentors around you, people whom you can call at any given point of time and they can help you or they can solve your doubts. Okay, so any doubts until now in the 5 or 6 things that I have covered until now? Yep, I'll be waiting for a minute. Any doubts? So no doubt that means people haven't understood anything or they have understood everything. Any doubts, guys? Yes or no? Understood, not understood? Or this guy speaks shit. He doesn't know anything. Hello, Shardul. Am I audible to you? Yep, tell me. Yeah. So actually, the thing is, like, whatever you have said. Prahlad, can you introduce? Yeah, sure. Yeah, that would be better for me to understand. Yeah, sure. So Prahlad Singh this side. I am currently a third year engineering student, pursuing computer engineering at JSUE, Hadapsar. Yep. I am also the co-lead at Google Developer Student Club and an MLSC. Awesome. So I just want to put forward my point of view in whatever you have said, and what I feel is like whatever you have said is known to all of us. It's just that we don't realize the importance of it, and we just sometimes ignore or forget those important things which you have just put forward in this session. So actually, in when you ask like doubts, it's Hmm. like doubts are not there, but it's Hmm. just that you just enlighten us with those Hmm. harsh truth and realities which we sometimes try to ignore, or maybe we don't really look into it. So yeah, this is like what I wanted to say. Cool. Thanks, Prahlad. Anyone else? Any doubt until now? Come on, guys. I don't think this was that boring, right? Or was it? हाँ ना कुछ तो बोलो या फिर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है आई कैन इवन स्विच टू हिंदी मराठी सम कन्नड़ा yes or no? Definitely, it's not boring. It's actually very good. The session is going very good, I'll say. Yep. Apart from Prahlad, anyone else finds it interesting? तो काम कर दिया what I'll do is remaining session I'll do it in Hindi. So जो सो गए वो भी जाग जाएंगे थोड़े से ठीक है Excuse me, I would like to introduce myself. Yep. I
I'm from first year engineering. I would like to ask that what should be from first year? Should be my perspective towards the learning about all the parts, like to get into besides you say product-based companies or further options for us. Yep. So Om, I'll be covering that in my next slide. एक एक करके बताऊंगा डिटेल कौन से ईयर में हो, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब ठीक है. सो आई गेस वी कैन गो अहेड. नेक्स्ट थिंग, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉलेज लाइफ. हर एक एक इसमें क्या क्या करना है, मैंने क्या क्या किया, आपको क्या क्या करना चाहिए. ठीक है. उससे पहले कैन यू गाइस टेल मी, आप में से कितने लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उस हिसाब से आई पुट इन मोर एम्फोसिस ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ दैट दोज ईयर्स. कितने आप लोग कौन से ईयर में हो, टेल दैट टू मी और पुट इट इन द चैट इफ द चैट इज अवेलेबल. फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर. थर्ड सेकेंड फर्स्ट. ठीक है अच्छा खासा क्राउड है. वी हैव गुड क्राउड, मतलब क्राउड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इज व्हाट आई मेंट. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद द फर्स्ट ईयर. सो लेट्स से यू आर इन फर्स्ट ईयर एंड आई गेस अभी तक सिंस यू आर इन फर्स्ट ईयर आधा साल ही खत्म हुआ. सो यू हैव गुड टाइम. मतलब अब पहला आधा साल तो ये समझने में लग जाता है कि यार इंजीनियरिंग कर रहे क्यों, और लेक्चर्स कहाँ पे होते हैं, प्रोफेसर्स क्या करते हैं, या आई फील कि 4 से 6 महीना लगता है इंजीनियरिंग में मोल्ड होने के लिए. ठीक है, अब करना क्या. सबसे पहली चीज़, ये सबसे पहले एक चीज़ अच्छे से समझ लो. 2 रास्ते अपने पास, एक आईटी, दूसरा कोर, जो भी आपकी ब्रांच है. अभी से चूज कर लो आईटी में जाना है, कोर में जाना है. इफ़ यू थिंक आईटी इज गुड, आईटी मेरे को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, कर सकता हूँ, देन ओनली गो टू आईटी. इफ नॉट, अपनी अपनी कोर ब्रांचेस भी है आपके पास. और एक चीज़, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम नॉन टेक ब्रांचेस, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, केमिकल, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, सब कंप्यूटर वाले हैं यहाँ पे. ठीक है, ब्रांचेस भी डाल दो. ओके, समवन फ्रॉम ईएनटीसी, और जल्दी जल्दी डाल दो अपने अपने ब्रांचेस चैट में. ईएनटीसी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, नाइस, कंप्यूटर, कॉम्प आईटी. एआई क्या होता है रोहन, रोशन जॉर्ज? Sir, actually, yes, sir. It's artificial intelligence. There is a separate branch in our college for. ठीक है, चलो आई टेल यू व्हाई आई लाफ्ड लेटर. चलो मोस्टली है बाकी ब्रांच के बच्चे. तो लेट्स से यू स्टार्ट विद द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना है, प्रोडक्ट बेस क्रैक करना है. तो सो व्हाट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू इज कि एंड ऑफ थर्ड ईयर में हमारे पास, थर्ड ईयर स्टार्ट में वी हैव टू अप्लाई टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. व्हाट शुड आवर प्रोफाइल बी अंटिल द थर्ड ईयर. दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कि 2 साल में हमें क्या करना है, सो दैट थर्ड ईयर में हम एक ऐसे स्टेज में रहें जिस स्टेज में हम लायक रहें कि हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले एक चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लो कि, और निकाल दो दिमाग में से कि हम जेएसपीएम कॉलेज में या हम किसी टीयर 3 कॉलेज में, हमारा आईआईटी नहीं हुआ, एनआईटी नहीं हुआ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. सेकेंड थिंग, मतलब मेरे को खुद को ऐसे लोग पता है मेरी कॉलेज से, वीआईटी से. अब मेरा जो मेंटर है, ही इज़ फ्रॉम वीआईटी बट ही इज़ इन अमेजॉन. ठीक है. आई नो पीपल हु हैव बीन इन अमेजॉन, गूगल, कौन सा ऐप का पहले फैंग होता था हमारे टाइप का, मैंग है. मेरे को हर कंपनी में मेरे दोस्त हैं जो मेरे कॉलेज से हैं. तो ये बात अपने दिमाग से हटा दो कि छोटे कॉलेजेस के बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं. छोटे कॉलेज इन द सेंस जो टीयर 1 टीयर 2 के नहीं है, वो हम सब लोग हर कंपनी को क्रैक कर सकते हैं. सबसे पहले तो ये चीज़. उसमें से सेकेंड चीज़, ब्रांच डजेंट मैटर, स्किल्स मैटर. मैं खुद जब हायर करता हूँ ब्रांच दिखता भी नहीं हूँ मैं सिर्फ रेज्यूमे देखता हूँ, स्किल्स देखता हूँ, प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, इंटर्नशिप देखता हूँ, बस. दैट्स व्हाट इट इज़ नीडेड. सो व्हाट आई एम सेइंग इज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू
can crack a product based company irrespective of your college branch. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्किल्स क्या है आपके पास. सो स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं, अब हम इस पे आते हैं. फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट ईयर में क्या करना है, बेसिक से शुरुआत करेंगे. कितने लैंग्वेजेस है अपने पास बताओ मेरे को. कैन यू गाइस पुट मी कैन यू गाइस टेल मी Pranav, does pointer matters? Yep, I'll come to that as well. Tell me how many different कितने कोडिंग लैंग्वेजेस है अपने पास which a person can learn. Quick in chat. Now this is going to be very interactive. ठीक है, and I want you guys to give me all the answers. ठीक है, all the languages that you know, coding languages. ठीक है, ओमकार says जावा, और क्या क्या है अपने पास, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन. ओके प्राजक्ता, और बोलो. ठीक है, सी सी. HTML लैंग्वेज है क्या जैस्मिन? HTML is not a language. React is also not. ठीक है, React तो कम से कम समझ सकता हूँ. ठीक है, अदर से Ruby Swift भी है. HTML लैंग्वेज नहीं है. I'll send you some good memes on HTML लैंग्वेज. ठीक है, तो मोटे मोटा अगर हम देखें कितने लैंग्वेजेस है आपके पास. सबसे पहले बेसिक, विल स्टार्ट विथ व्हाट इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, समथिंग दैट इट स्टार्टेड विथ सी, राइट. सबसे पहला सी है अपने पास. थोड़ा सी को मॉडिफाई करेंगे, अपने पास आएगा सी प्लस प्लस. सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है? सी बहुत बेकार है, सी प्लस प्लस थोड़ा कम बेकार है. ठीक है, सी प्लस प्लस में लाइब्रेरी सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा है. सी प्लस प्लस कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए या डीएससी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, हालांकि है नहीं. सेकेंड थिंग, इन दो लैंग्वेजेस के ड्रॉबैक्स समझते हुए अपने पास एक नई लैंग्वेज है जिसके ऊपर क्लास एंड कंसेप्ट, जिसके ऊपर बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड है, उसको हम कहते हैं जावा. कितने लैंग्वेजेस हुए? 3, करेक्ट. अब हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी चाहिए था और हमें डेटा टाइप से भी नहीं खेलना था, तो हमने क्या बनी, जावास्क्रिप्ट. आ गई चौथी लैंग्वेज. एंड में हमें सब कुछ चाहिए था बट सबसे इजी चाहिए था, तो हमने बना पाइथन. तो अपने पास कोडिंग के लिए सिर्फ 5 लैंग्वेजेस हैं. सी को नहीं पकड़ूंगा मैं, 4 लैंग्वेजेस हैं. तो आपको आपके फर्स्ट ईयर में किसी एक लैंग्वेज को पकड़ना है. मतलब मैं तो कहूँगा चारों लैंग्वेजेस सीख लो, बट किसी एक लैंग्वेज को पकड़ना है और उस लैंग्वेज को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड और आंसर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट लैंग्वेज. मतलब बेसिक्स इतने क्लियर करने हैं कि देयर इज नो लिमिट फॉर दैट. सो दैट इज फर्स्ट थिंग. Start with the basics of the language, understand what that language is, understand how the language works, syntax क्या है, work कैसे करता है, and everything. Second thing, join a club, which I already said. Third thing is let's now come to software development. So how I categorize software development is into 3 parts. ठीक है, first part is Android development, second part is web development, third is machine learning या फिर. ठीक है, so Android में what is used? Quickly, which language is used in Android? I see someone has raised their hand. Yes, Ganesh. Is it important to learn HTML before learning coding? Nope. HTML का और coding का language. कुछ रिलेशन नहीं है HTML और coding का. Okay, thank you. ठीक है, तो सबसे पहले yes. Next question. Kotlin. Yes. तो अपने पास no, actually it was me only. yes, thanks Ganesh. So अपने पास मोटे मोटे 3 ट्रैक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाने के लिए. सो बिफोर यू मूव ऑन टू द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, डेवलप क्या करते हैं, वेबसाइट चलती कैसी है, ऐप बनते कैसे हैं, या ML मॉडल्स कैसे वर्क करते हैं. तो आपके पास 3 ऑप्शन है जो मैंने बताया. फर्स्ट विल स्टार्ट विद एंड्रॉयड. अगर एंड्रॉयड करना है तो द बेस्ट थिंग इज स्टार्ट विद जावा. My personal favorite language is Java. I'm an avid practitioner, promoter of Java. I use Java daily in my coding. Java is the best language that I have seen until now. ठीक है, so depending upon what you like, start with a language, or first start with a language and then pick whatever technology you like. ठीक है, so similarly, if you want to go into Android space, start with Java. If you want to go into the web development space, start with JavaScript. ठीक है, फिर HTML वो सब बात की चीज़ है. ठीक है, और फिर उसके बाद स्टार्ट विथ अगर मशीन लर्निंग सीखना है तो स्टार्ट विथ पाइथन. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज जो मैंने किया था, आई स्टार्टेड विथ सी. ठीक है, सी मेरे को बहुत अच्छे से आता है बिकॉज आई बिलीव कि सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके आप प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट सीखने में ज़्यादा ईजी है.
ठीक है, अगर आप सी पहले सीख लेते हो आप बाद में कोई भी लैंग्वेज सीख लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वाले जो भी है आपके सिलेबस में भी होगा, नहीं भी होगा तो स्टार्ट विथ सी, अंडरस्टैंड फॉर लूप्स क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होता है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सेकेंड थिंग, वंस यू हैव दीज थिंग्स इन प्लेस, लर्न मोर। अब सी में वगैरह when you start creating those projects would be mostly like library management system, ये सब नहीं बनाना है अपने को, ठीक है। what we are going to do is we are going to use the languages that we have as the base and then learn the higher concepts. मेन तीन ही चीज़ें जो अपने को सीखनी है, एंड्रॉयड, वेब, मशीन लर्निंग, तीनों में से जो भी पसंद आता है। what I did was I first did a workshop. So अब मेरे कॉलेज में VIT में there was this one workshop for machine learning. I enrolled for it, went into it, अच्छा लगा, स्टार्ट कर दिया मशीन लर्निंग से। Similarly what you will see is बहुत workshops होते हैं ऐसे कॉलेजेस में, go to other colleges, attend those workshops. If there is a bootcamp workshop of 3-4 days on machine learning or Android or web, go and attend it. What that workshop will do for you is it will generate the interest in that one particular technology for you. So start with that. Now once that interest is generated, so let's say you went and you attended a workshop for web development. At the end of 4 days, at the end of the 4th day, you thought कि यार कर लूंगा ये, तो then buy a Udemy course. Any Udemy course costs for around maximum 500 rupees. 25-26 घंटे का पूरा start to end course मिलता है. Then learn it on your own and create projects. So at the end of first year, what I want you guys to do if you want to crack a product based company, first thing is कोई तो एक लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सेकंड, कोई इन तीनों में से एक टेक्नोलॉजी आपकी पक्की होनी चाहिए कि यार मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मैं इसमें आगे काम कर सकता हूँ। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड स्टार्ट डेवलपिंग सम प्रोजेक्ट्स इन द फर्स्ट ईयर। सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हम लोगों ने क्या देखा, हमारे पास एक अच्छी, हमने डिसाइड कर लिया हमें कौन सी लैंग्वेज पसंद है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी डिसाइडेड है हमारी, और हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स भी है। At the end of first year, if you have these 3 things with you, I feel you are in the perfect path to crack a product based company. Any doubt until now for a first year student? जितने भी first year वाले quickly, कोई doubt है? No sir. Looks good. कोई doubt? Language कैसे choose करे, सीखें कहाँ से? No. चलो आओ अब आते हैं सेकेंड ईयर वालों की तरफ, ठीक है। तो सेकेंड ईयर इज व्हेन यू विल, आई थिंक यू विल लर्न डीएसए। डीएसए जिन लोगों को नहीं पता है, डीएसए स्टैंड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जो मेरे को एक लोगों ने बताया था, जो मेरे को मेरे मेंटोर्स ने बताया था, बाकी इंजीनियरिंग में कुछ नहीं याद रहा तो भी चलेगा। डेटा स्ट्रक्चर्स नींद में से उठा के भी अगर पूछे तो भी आना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली इज अ बिट एज अ सब्जेक्ट विच यू विल लर्न, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। डीएसए में बहुत सारे कंसेप्ट है फिर आपके पास। सो जो डीएसए है ना, योर डीएसए शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो डीएसए के कंसेप्ट है आपके शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होंगी, एवरी कंपनी यू टेक, आई हैव गिवन इंटरव्यूज फॉर मेनी कंपनीज, आई टेल यू, Amazon, Google, Flipkart, every one of them will ask you a coding question on DSA. Or as a matter of fact now, even small companies have started asking questions on DSA. So if you want to crack a product based company, you need to have your DSA on your fingertips, ठीक है। तो स्टार्ट लर्निंग डीएसए। अब जो लोग सेकेंड ईयर में हैं, अब उनको पता होगा, अब उनको समस्या क्या आ रही होगी कि जैसे वो लोग डीएसए सीख रहे हैं, अब डीएसए इंप्लीमेंट किस में करें? देयर आर 5 लैंग्वेजेस फॉर मी टू इम्प्लीमेंट डीएसए। सो दैट्स वाई फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज चूज करना बहुत ज़रूरी होता है, so that when you go into second year and when you start learning DSA, you exactly know which language you want to implement that DSA in. That's why first year language selection is very important. For second year students, start with DSA and implement it in the language that you have selected, ठीक है। That is more important. Third thing, start solving the DSA questions. लीड कोड करके प्लेटफॉर्म, देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है लीड कोड है, हैकर रैंक है, मोस्टली 2 ही हैं जो आजकल चलते हैं। सो एवरी डे, मतलब ये तो थर्ड ईयर वालों के लिए, बट स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन लीड कोड। आई फील एवरी वन ऑफ यू शुड हैव एन अकाउंट ऑन लीड कोड, गो देयर, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई डिड 4 इंटर्नशिप्स। सो 4 इंटर्नशिप्स कब से कब तक की? सेकेंड ईयर में 2 इंटर्नशिप्स, थर्ड ईयर में 2 इंटर्नशिप्स, ऐसे करके मैंने 4 इंटर्नशिप्स की। सो सिमिलरली एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, if you have the languages clear, if you have the
technology stack sorted out, you have some good projects, you will get an internship. So second year mein, while you are learning data structures, at the same time you will have those internships, you can do those internships, or I want you to do those internships, so that until you reach your third year you will have, I feel you should have at least 2 internships in place जहाँ पे आपने काम किया हो. तो सेकेंड ईयर वालों गो एंड फाइंड सम इंटर्नशिप्स. ठीक है, किसमें डजेंट मैटर, वेब में, एंड्रॉयड में, एमएल में, डिजाइन में, किसी में भी डजेंट मैटर, गो एंड गेट सम इंटर्नशिप्स. ओके, तो इन सब से क्या होगा, नो यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे. सो रेज्यूमे क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, आई कम टू दैट एज वेल. व्हाई रेज्यूमेज आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, आई कम टू दैट एज वेल. सो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, एनी डाउट अंटिल नाउ? सेकेंड ईयर में क्या करना है, बेसिकली क्या क्या करना है, डीएसए करना है, हर एक दिन एक मतलब कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करना है, इंटर्नशिप लेनी है, मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, सो सेकेंड ईयर पीप्स, एनी डाउट? सेकेंड ईयर वाला नहीं है क्या कोई? कोई तो कुछ तो बोलो चैट में. ठीक है, so Ashutosh says no. Okay, coming to the third and final year student, ये startup is सेकेंड ईयर में भी स्टार्टअप कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हो, थर्ड ईयर में अगर एमएस वगैरह के लिए जाना है तो करो, वरना मत करो. कंटिन्यू विद इंटर्नशिप्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज इट विल हेल्प यू नेटवर्क, it will help you increase your reach. Yeah, it will help you increase your reach. अब कुछ मेरे दोस्त हैं who got internships and who got jobs from their open source community contribution. So let's say you contribute to Red Hat, let's say. So Red Hat has a wide range of open source communities. So if you start contributing to Red Hat, if the company feels कि you are a good contributor, you can be a good addition to them. So ऐसे होता है. Similarly, I have a friend who got offered a job out of the community. So start open source contribution. Now for third and final year people, the most important thing is हर दिन एक क्वेश्चन डीएसए का होना ही होना चाहिए. उसके बिना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं निकलेगी. इफ यू आर फीलिंग कि 4-6 महीने में डीएसए रात भर करके कर लूंगा, नहीं होगा. ठीक है, सो दैट्स वाई हर दिन एक क्वेश्चन डीएसए का होना चाहिए. ओके, एंड देन एट द एंड पार्टिसिपेट इन हैकेथॉन्स. नाउ आई विल कम टू द मेन गैस्प कि अब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है लेट्स से, तो उसके लिए क्या क्या स्टेजेस हैं या उसमें क्या क्या करना है हमें. आई कम टू दैट नाउ. ठीक है, तो हाउ टू क्रैक अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. बेसिकली सबसे पहले सर्च, कहाँ पे दिखना है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए. एनी प्लेटफॉर्म्स दैट यू नो. फर्स्ट इज लिंक्डइन. ठीक है, लिंक्डइन मोस्ट ऑफ द अब करना क्या है, फर्स्टली उस कंपनी के जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको जाके आपको टारगेट करना है. वैसे इफ यू आस्क मी अबाउट रेड हैट, देयर आर सर्टेन पीपल, 2 to 3 पीपल जिनके आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे. गो एंड connect with those people or LinkedIn, because the chances are that these people will post about the opportunities that come up on the company. ठीक है, अब how does an opportunity come? HR वाले जो होते हैं वो करियर पेज पे डाल देते हैं. ठीक है, उसके बाद the team that hires shares it on LinkedIn. How I got to know about hiring at Red Hat? I'll tell you, Red Hat was not even in my list. ठीक है, I didn't had any plans to join Red Hat. Red Hat मेरी टारगेट कंपनी और ड्रीम कंपनी थी भी नहीं. ठीक है, आई सॉ अ मैसेज ऑन लिंक्डइन कि माय टीम इज हायरिंग इंटर्न्स, क्लिक टू अप्लाई. आई अप्लाइड. सिमिलरली आपको भी लिंक्डइन पे ऐसे लोगों को ऐड करना पड़ेगा जिनमें हु आर इन्फ्लुएंसर्स हु लाइक दोज पोस्ट, जो इंजीनियरिंग मैनेजर्स हैं, ऑल दोज थिंग. ठीक है, तो यू हैव टू डू द सर्चिंग पार्ट देयर. Second and the most important part is apply. How to apply? Second thing is apply. Don't think about applying. कि यार I can't crack Google. Should I apply to Google? Yes, apply to Google. Get the coding test. Like I have given Google coding test almost twice or thrice. पहली बार जब दिया था तब 60 मिनट्स का कोडिंग टेस्ट होता है. देयर आर 2 क्वेश्चंस. पहली बार में तो पहले 60 मिनट तो बस मैं क्वेश्चन पढ़ते बैठा था. सेकेंड टाइम दिया तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, थर्ड टाइम दिया तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए. सो अप्लाई. डोंट थिंक अबाउट मेरा होगा या नहीं होगा. अप्लाई. One more thing that I would recommend is before applying, see if you can get a referral. Red Hat के लिए है, come and contact me कि शार्दुल भैया ये पोजीशन है, I want, can you please refer me? I feel कि I have all the necessary skills that are required. Generally
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ऐसे होता है, रेफरल वर्क्स मोर देन नॉर्मल एप्लीकेशन, because for one application in Red Hat we get about thousands of resumes. So at that point of time what the HR does is first filter is via the is via those people who recommend. So go and message people on LinkedIn. You will find formats on LinkedIn on how to ask a referral. Go there, apply via an referral, it counts. ठीक है. Third thing, resume. Resume is something that will so there are 3 steps I feel while cracking a product based company. Number 1 step is resume. अगर आपका resume strong नहीं होगा ना, निकाल दिया जाओगे, टेस्ट के लिए तो बुलाएंगे भी नहीं. ठीक है. सो लाइक ड्यूरिंग माय टाइम हाउ इट वाज फर्स्ट रेज्यूमे, फिर टेस्ट और फिर कोड, मतलब इंटरव्यू. ऐसे 3 स्टेप की प्रोसेस होती है कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करने के लिए. अब पिछले 1 घंटे से जो भी बकवास मैंने की ना, वो इसलिए थी क्योंकि आपका अगर फर्स्ट स्टेप ही निकला नहीं ना, सेकंड और थर्ड स्टेप तो भूल भी जाओ, ऐसे कुछ होता है करके. आपका रेज्यूमे इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो रिक्रूटर ने आपका कॉलेज और आपकी ब्रांच दिखनी भी नहीं चाहिए. जो मेरे साथ हुआ, माय रेज्यूमे इज सो स्ट्रांग, पीपल डोंट इवन आस्क मी कौन से कॉलेज से, कौन से ब्रांच से, सीधा टेस्ट के लिए बुलाते हैं. ठीक है. तो रेज्यूमे में भी there are certain tips. So I take those resume review sessions जिनमें मैं पर्सनली आपका रेज्यूमे एक एक लाइन बाय लाइन देखता हूँ कि ये सेक्शन इधर नहीं इधर चाहिए. बहुत डाउट होते हैं बच्चों को, पहले प्रोजेक्ट्स डाले या पहले एजुकेशन डाले, पॉइंटर कितना पॉइंटर डाले या ना डाले, ये कैसे डालना है वो कैसे डालना है. सो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ रेज्यूमे विच इज लाइक अ डिफरेंट सेशन इन इटसेल्फ वेयर एन आई एक्सप्लेन कि एक रेज्यूमे बनता कैसे है, फॉर्मेटिंग कैसे होनी चाहिए, फोटो डालना है नहीं डालना है, 1 पेज का बनाना है 2 पेज का बनाना है, क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है. One thing that I will give you for resumes, or what I so when I hired for Red Hat this time for my team, when I was given the task of going through when I was going through the resumes and asking candidates for the test, there was one thing that I looked, and that one thing was impact. आपका impact दिखना चाहिए. ठीक है. अगर मैं अब when I as a recruiter what I do in a product based companies, मैं एक resume से कैंडिडेट को जज करता हूँ. मैं देखता हूँ, अगर मैं फर्स्ट थिंग में देखता हूँ कि कहाँ पे काम किया है, पहले किस में कहाँ पे काम किया, दैट इज़ द इंटर्नशिप पार्ट. अगर इंटर्नशिप्स किए होंगे तो दैट इज़ लाइक अ ग्रीन सिग्नल फॉर मी कि यार कहीं पे तो काम किया, मतलब ऐसा है कि अगर वो लोग इसे झेल सकते हैं तो मैं तो झेल लूँगा. सेकेंड थिंग इज स्किल्स क्या है उसमें. ठीक है. किस किस पे काम किया उसने. इफ माई टीम वर्क्स ऑन जावा, आई वोंट वांट अ पर्सन हु वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट, दैट इज द सेकेंड थिंग. ठीक है. थर्ड थिंग इज प्रोजेक्ट्स क्या क्या किए उसने. ये सिर्फ बोलता है कि मेरे को जावास्क्रिप्ट आती है या सच में इसने वेब डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं. दैट इज द थिंग, दैट इज द थर्ड थिंग दैट आई लुक फॉर इन अ रिज्यूमे. इसलिए जो मैं आपको पिछले 1 घंटे से समझा रहा था ना, आपका रिज्यूमे अगर उतना स्ट्रांग होगा ही नहीं तो टेस्ट की लिंक का तो सोच छोड़ो ये तो. ठीक है. तो लेट्स से यू हैव फॉलोड अंटिल नाउ, यू हैव अ वेरी स्ट्रांग रिज्यूमे एंड योर रिज्यूमे गॉट शॉर्टलिस्टेड. सो बिफोर कॉलिंग एन इंटरव्यू, हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टेस्ट लेगी ही लेगी, बिकॉज हम जैसे इंजीनियर्स का टाइम फ्री नहीं है. ठीक है. हम लोगों को एक पोजीशन के लिए 10 से 15 लोगों को इंटरव्यू करना पड़ता है और एप्लीकेशंस आते हैं 1000. अब जितने एप्लीकेशंस आते हैं 1000 के 1000 लोगों को तो हम इंटरव्यू नहीं कर सकते. सो फॉर अस द बेस्ट थिंग टू फिल्टर आउट कैंडिडेट्स इज अ टेस्ट. अब टेस्ट में भी 2 चीज़ें आती हैं मेरे पास. फर्स्ट इज अ टेक्निकल टेस्ट एंड सेकेंड थिंग इज अ कोडिंग क्वेश्चन. टेक्निकल टेस्ट में आपका क्या आएगा, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा, दैट इज योर लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज पूछ लेंगे आपको. डेटा स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े, डेटा स्ट्रक्चर्स पूछ लेंगे. ये छोड़ के आपको क्या क्या पढ़ना है मैं वो बता देता हूँ. लैंग्वेज आती है, डेटा स्ट्रक्चर आता है. थर्ड थिंग इज ओप्स. ओप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के होने चाहिए. ठीक है. मतलब मोस्टली जो मैंने देखा है टेस्ट में, जितने भी कंपनीज को मैंने अप्लाई किया या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फाइंड द आउटपुट वाले क्वेश्चन आएंगे. उसके बाद ओएस के 1-2 क्वेश्चन पकड़ लो और फिर डीबीएमएस इज द मेन थिंग, और डीबीएमएस के भी 1-2 क्वेश्चन पकड़ लो. सो दीज 4 थिंग्स मैं जब जो मेरे मेंटर ने मेरे को बोला था ना कि तू बाकी कुछ बात, तू डीएस पढ़, तू ऊप्स पढ़, तू डीबीएमएस पढ़, तू ओएस पढ़, अगर ये 4 सब्जेक्ट तेरे को आते हैं ना तो कोई भी कंपनी क्रैक कर सकता है. इट डजंट मैटर द नेम ऑफ ए कंपनी. सो ये 4 चीज़ें आपको टेस्ट के टेक्निकल और इसके असेसमेंट के लिए चाहिए. 4 चीज़ें. अगर आप कंप्यूटर से हो, बाय डिफ़ॉल्ट आप ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रहे हो. अगर आप कंप्यूटर से नहीं हो
तो यार थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा ये सब चीज़ें पढ़ने में. नो वी डोंट हैव लाइक, मेरे को भी, मैं भी नहीं था यार, मेरे को किसी ने नहीं डीएस सिखाया, मेरे को किसी ने नहीं डीबीएमएस सिखाया, खुद से पढ़ना पड़ा. तो यू विल हैव टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट्स इफ यू वांट टू गो अहेड एंड क्रैक दैट कंपनी. ठीक है, क्लियर है अब तक? यस नो, जल्दी से चैट में. समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ भी, एनी फीडबैक पुट इन. सो गए क्या सब लोग? यस और नो तो डाल दो. क्लियर, यस. ठीक है, चलो जागे है. नेक्स्ट थिंग, कोडिंग क्वेश्चन. अब कोडिंग क्वेश्चन होता क्या? सो रेड हैट में जनरली 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, 2 कोडिंग क्वेश्चन is what I saw in Red Hat. Similarly, every test that I have given had 2 coding questions. तो 2 कोडिंग क्वेश्चन तो पकड़ गए चलो. अब उसमें से भी कंपनी टू कंपनी डिफर करता है. जैसे कुछ कंपनी में कैसा होता है, एक कोडिंग क्वेश्चन होगा, एक डेटा, एक किसका, सॉरी डीबीएमएस का, एसक्यूएल बेस्ड क्वेरी का क्वेश्चन होगा. सो जो मैंने आपको पहले लास्ट स्लाइड में बोला था ना कि रोज एक कोडिंग क्वेश्चन करना पड़ेगा, वो क्यों है? जब आपके पास एक कोडिंग क्वेश्चन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इसमें आएगा ना, तो ये सोचते नहीं बैठोगे कि यार इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगता है, इसको कैसे करते हैं. उस टाइम पे यू क्विकली सॉल्व दैट क्वेश्चन, टेक केयर ऑफ ऑल द टेस्ट केसेस एंड देन डू इट. ठीक है, तो दैट्स वाई अब मैं जो भी मैंने पहले बताया ना, आई एम जस्ट लाइक वो डॉट्स जोड़ने का ट्राई करूंगा मैं. कोडिंग जो लीड कोड किया है ना हमने पिछले 2 साल तक, वो ऐसे ही नहीं किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, क्वेश्चन देख के बता सकता हूँ मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लेगा. आई हैव दैट लेवल नाउ इन डीएसए. व्हाई? बिकॉज आई डिड डीएसए कंटिन्यूसली फॉर 2 years, मतलब विद डेज, बट डिड कंटिन्यूसली डीएसए फॉर 2 years. हर क्वेश्चन का, हर डेटा स्ट्रक्चर का पैटर्न पता है मुझे. प्रोडक्ट बेस्ड क्रैक कंपनी क्रैक करने के लिए वही चाहिए. अगर वो कोडिंग क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तुमको नहीं लेंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में. ठीक है, सो लेट्स से रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया, टेस्ट भी एस कर दी. ठीक है, इंटरव्यू के लिए बुला दी. अब इंटरव्यू में पूछेगा क्या? हर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, अब इस इंटरव्यू के बिना पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं. सो once you like if you reach that stage of interview, call me, message me, I'll exactly tell you कंपनी वाइज की क्या क्या अलग से करना है, बट एक जनरलाइज पैटर्न बता देता हूँ कि क्या होता है. सो इन एनी इंटरव्यू, फर्स्ट थिंग दैट यू स्टार्ट अप विद इज, एनी गेसेस, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले चीज किस पे काम करना है? सॉरी, सेल्फ इंट्रोडक्शन. परफेक्ट. तो सेल्फ इंट्रोडक्शन इज समथिंग दैट वेरी फ्यू पीपल वर्क अपॉन, बट दैट इज समथिंग जो आपका पहला इंप्रेशन है इंटरव्यूअर के ऊपर. ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे काम करना है. सेकेंड थिंग, प्रोजेक्ट्स के ऊपर. अब जब इंटरव्यू में पूछेगा क्या, रेज्यूमे के ऊपर तो पूछेगा, उसके पास कुछ नहीं है और पूछने के लिए. ठीक है, और आपका रेज्यूमे इतना स्ट्रांग होगा तब तक आपके पास इंटर्नशिप से बात करने के लिए, आपके पास प्रोजेक्ट से बात करने के लिए, आपके पास टेक्नोलॉजी से बात करने के लिए, कितना कुछ नहीं सुना क्या होगा उसको. वो खुद इंटरव्यू एक्सपीरियंस शुड बी सच कि आपका इंटरव्यूअर आपसे 2 चीज़ें सीख के जाए. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज जो होते हैं स्टार्ट्स विद एन इंट्रोडक्शन. व्हाट आई हैव सीन और व्हाट आई डू इज आई आस्क देम अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स. फिर उसके बाद आई आस्क दीज पीपल अबाउट व्हाट दे हैव वर्कड ऑन देयर कॉलेज, देयर सब्जेक्ट्स, एंड देन एक क्वेश्चन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आते जाता है. मतलब अगर वो उसने एमएल यूज़ किया है लेट्स से, तो आई स्टार्ट विथ व्हाट इज रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या होता है, फिर रिग्रेशन में कौन से रिग्रेशन यूज़ किए, जो तूने प्रोजेक्ट किया उसमें कैसा था, फिर तूने एक्यूरेसी कितनी है प्रोजेक्ट की, उस एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, सॉरी इंक्रीज करने के लिए तूने क्या किया, देखो डेटा सेट कहाँ से मिला, उस डेटा सेट में जो भी तेरे पास एम्प्टी डेटा वेरिएबल्स थे उस सबको तूने कैसे हैंडल किया. सो ऐसे एक के ऊपर क्वेश्चंस बनते जाते हैं और ये आप फिर इंटरव्यू देते देते सीखते हैं. अब आई वॉज सो लकी दैट बिफोर माई रेड हैट इंटरव्यू माई मेंटर टुक माई मॉक इंटरव्यू. सो आई वुड सजेस्ट जिस दिन भी आपका इंटरव्यू होगा एक दिन पहले सीनियर को लेके बैठा दो, दोस्त को लेके बैठो और एक मॉक इंटरव्यू दो, राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. सो जो मेरा इंटरव्यूअर था उसने जो क्वेश्चन मेरा लिया मॉक इंटरव्यू में, वो क्वेश्चन था ट्रीज के ऊपर. दैट वाज अ वेरी हाई क्वेश्चन, बट आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड ऑन दैट वन पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड ही गेव मी अ वन पर्टिकुलर यूज केस, एंड उसी सिमिलर यूज केस के ऊपर मेरे को नेक्स्ट डे इंटरव्यू में क्वेश्चन है. सो इफ यू आर लकी दोज थिंग्स विल ऑल्सो हैपन टू यू. बट
गिविंग एन इंटरव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्लेसमेंट प्रोसेस, बिकॉज आधे लोग तो वहाँ पे रिवाइज करते 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 आएंगे. इट इज़ नॉट अबाउट रिविजन, इट इज़ नॉट अबाउट तुमको क्या पता है. उस 1 घंटे के अंदर तू उस आदमी को कितना कन्विंस कर लेता है ना, दैट इज़ द मेन थिंग. अगर तेरे को कुछ नहीं आता है तो भी चलेगा, अगर उस 1 घंटे, ऑब्वियसली दैट एन इंटरव्यूअर विल कैच. आई हैव माई सेल्फ कैच्ड more than half of my students copying in an interview. That is the worst thing to do. कंपनी से ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, ठीक है. बट अपने को क्या अलग करना है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करने के लिए? इंटरव्यू देना है, मॉक इंटरव्यू देना है. जाने से पहले हम इतने प्रिपेयर्ड होंगे इंटरव्यू में कि भाई तू पूछना, तेरे को क्या पूछना है पूछ. आई हैव थॉट अबाउट एवरी सिनेरियो इन माई हेड वेर इन ही कैन ड्राफ्ट अ क्वेश्चन ऑन माई रिज्यूम. एक एक वर्ड पता है कि उस पर क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा वो सब. तो दैट इज द नेक्स्ट थिंग, इंटरव्यू. आई फील कि जितना मैंने अभी तक बोला, इफ यू डू इवन लाइक अगर उतना आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो, यू इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर कॉलेज, कुछ भी ब्रांच वगैरह रहने दो, यू विल क्रैक अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता है फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी. अलग क्या है, एफर्ट्स अलग है. I repeat again, the same thing is, it is not a 1 day's job, it is not a 1 month or 1 year job, it is a 3 years job. क्यों? रिज्यूमे ठीक करना है ना, 3 साल काम करना पड़ेगा वो रिज्यूमे में कुछ तो डालने के लिए. अब बच्चे आते हैं मेरे पास, 3rd ईयर में हूँ, रिज्यूमे में डालने के लिए है क्या? सिर्फ 2 प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप्स नहीं किए अभी तक. क्या डाले रिज्यूमे में? फिर क्या डालना पड़ता है? हॉबीज, स्केचिंग, ड्राइंग, क्रिकेट. ना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करनी है, टेक पे बात कर, ठीक है, टेक पे बात कर. इसलिए ये 3 महीने की चीज़ नहीं है, 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी. इवन इफ आज भी स्टार्ट कर रहे हो ना, आई कैन टेल यू एग्जैक्टली व्हाट नीडेड टू बी डन, ठीक है. दिस इज लाइक दी बूम. अभी आईटी में बहुत अच्छी चल रही, ठीक है. हमारे टाइम पे रिसोर्सेज थे, सब था. यू गाइस इवन हैव बेटर थिंग्स. अब आपको रेडीमेड कोर्सेज मिलते हैं. यू हैव 450 क्वेश्चंस ऑफ डीएसए. आपको एग्जैक्टली पता है कंपनी में क्या क्या करना है. यू हैव इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जिसमें आप जाके देख सकते हो क्या पूछते हैं, उसको आप ज़्यादा कर सकते हो. सो माई गुरु मंत्र टू क्रैक अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इज, फर्स्ट थिंग, सीरियस हो जाओ. वी कम फ्रॉम अ नॉन. अब आई टेल यू वन थिंग, आई डिडंट हैड एनी फ्रेंड्स इन माई 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, नॉट अ सिंगल फ्रेंड. चुपचाप जाता था, कॉलेज जाता था, काम करता था, इंटर्नशिप करता था, घर पे आता था. आई एम 1,000 टाइम बेटर पोजिशन देन ऑल माई पियर्स इन कॉलेज, इन माई ब्रांच स्पेसिफिकली. क्यों? बिकॉज आई वर्कड माई एस ऑफ, ठीक है. सिमिलरली इफ यू वांट टू क्रैक अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, फर्स्ट थिंग सीरियस हो जाओ कि करना है क्रैक, ठीक है. एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जो सब लोग कर रहे हैं. फ्रेंड्स के साथ घूमने गए, बाहर गए, ये गए ना. 3rd ईयर है, कंपनी क्रैक करना है. आज मैं डबल मजे मारता हूँ, ठीक है. कॉलेज टाइम पे बस पढ़ाई करता था. आज सैटरडे संडे घर पे पाव टिकते नहीं हैं. तो एन्जॉयमेंट बहुत मिलेगा आगे जाके. ये 3 साल अच्छे से निकाल लो, अच्छे से. बिकॉज आई एम सेइंग कि, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि 4th ईयर में आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी, तो उस हिसाब से डू इट. और एक चीज़ जो मेरा कवर करना रह गया, दैट इज ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस. सो सिंस यू आर इन नॉन टेक, आई एम एक्सपेक्टिंग जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा. I was not allowed to sit in any of the tech companies that came to my college because those companies didn't allow students from non-tech branches. वो बस कॉम्प आईटी वालों को अलाउ करते थे. तो ऐसे टाइम पे मैंने क्या किया, नेटवर्क से बाकी कंपनीज में अप्लाई किया. रेड हैट इज़ दी, लाइक आई सेड इट विथ वेरी प्राउड कि रेड हैट इज़ द कंपनी, ओनली कंपनी विच आई सॉ जिनको ब्रांच से घंटा फर्क नहीं पड़ता था. मैंने कुछ मैंग कंपनीज भी देखी है जिन्होंने मेरे को ब्रांच की वजह से रिजेक्ट कर दिया है. रिक्रूटर ने बोला है बहुत कि ब्रांच इशू है, बट ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जहाँ पे आपके ब्रांच को नहीं जज किया जाएगा. सो टारगेट दोज कंपनीज एज वेल. सो आई गेस आई हैव स्पोकन अ लॉट एंड आई वुड नाउ बी ओपन टू. सो अब नेक्स्ट चीज, लेट्स कनेक्ट यार. हाउ कैन यू कॉन्टैक्ट मी? फर्स्ट थिंग इज माई ईमेल. ईमेल तो मैं पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादा, तो फिर भी दे दिया है. इफ़ यू वॉन्ट you can email me any doubts that you have and I'll try to address it. Second thing जहाँ पे मैं ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हूँ, that is LinkedIn और Twitter. So LinkedIn पे तो 101%, कितने लोग हैं यहाँ पे? 50 लोग हैं आई गेस. 50 लोग रिक्वेस्ट भेजो मेरे को, I'll accept that request today itself. LinkedIn is something जो मैं रोज़ दिखता हूँ. और I'll come to the doubts प्रणव. Yeah, LinkedIn is something जहाँ पे मैं रोज़ देखता हूँ, so I'll address your doubts better on LinkedIn.
or if you want a personalized session with me, one-on-one बैठना है, you want to schedule a meet with me, so TopMate is something that I am on. Go to my TopMate, there you can schedule a session with me. I take it for a very nominal price because उसमें फिर मैं भी सीरियस हूँ और आप भी सीरियस हो, that we want to work it out. So उसमें what I do is I generally conduct two sessions. One is a resume review session and second is an mock interview or a mentorship session, जिसमें ऐसा होता है कि let's say you're coming for a Red Hat interview tomorrow. I know Red Hat में क्या पूछते हैं. So in that interview I'll tell you कि ऐसे ऐसे flow होगा, ये होगा, वो होगा. और if you have a let's say Google interview, Barclays interview, Qualys interview, I know उसमें क्या क्या पूछा जाएगा. I have done that research. Then I'll take that mock interview for you, tell you where to improve yourself. So if you want to schedule a personalized session with me for your resume review or your mock interview or mentorship session की सब बर्बाद हो गया, अब क्या करें, तो TopMate is wherein you can find me and you have the links. So that's it from my side, guys. If you have any questions, I'll be more than happy to answer those. Can you suggest some names of mentors? देखो मेंटर्स कैसा होता है ना, मेंटर्स इज वेरी पर्सनल थिंग, ठीक है. अब मेंटर कैसा चाहिए, मेंटर शुड बी समवन जिनका फ़ोन नंबर भी तेरे पास चाहिए, वेर इन यू शुड बी एबल टू कॉल दैट पर्सन एनी टाइम. अब मेरे हर इंटरव्यू से पहले आई कॉल माई मेंटर, आस्क हिम कि यार भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या करो, एंड ही टेल यू. सो आई वोंट सजेस्ट यू सम मेंटर्स. What I'll say is go and find people around you who you think can help you. No more doubts? Guys, if you have any questions, Shardul is here to solve your all doubts. I see the pleasure that the 50 and 46 students are still there with us, engaging with the content, and Shardul is taking on the above the clouds the session. Cool. If you have any questions, guys, you can put it in the chat box or unmute your mic. I have given the access to all the participants. Also, I'm sharing the link feedback form. Whoever the person is going to fill the feedback form, only those people are getting the certification. So please fill the feedback form and you'll get the certification in upcoming 2 days. बोलो डाउट्स बोलो, क्या डाउट्स है पूछो. कैन यू शेयर ओपन सोर्स कम्युनिटी? ओके कोमल, तो राज दिस ओके. ओपन सोर्स क्या होता है, ठीक है चलो. सो ओपन सोर्स क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है. फर्स्ट वन इज क्लोज सोर्स एंड सेकंड वन इज ओपन सोर्स. अब हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट गूगल क्लाउड? लेट्स से गूगल क्लाउड, ठीक है. गूगल क्लाउड क्या है, गूगल का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जो वो बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस नो लिनक्स? चलो खुद के कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करता हूँ मैं. कितने लोग को लिनक्स पता है क्या है? कितने लोग को लिनक्स पता है? यस और नो? लिनक्स कम ऑन गाइस, लिनक्स तो पता होना चाहिए यार. लिनक्स नहीं पता तुम लोगों को सच में? यश सेज यस. हाँ नसीब यार, नसीब. सो लिनक्स क्या है? लिनक्स बेसिकली, लिनक्स एक कर्नल है which is an operating system thing which exists in every device that exists on this planet. So Linux का कोड किसने लिखा? My inspiration लिनस टोरवाल्ड्स ने. तो लिनस टोरवाल्ड्स ने क्या किया, एक बार लिनक्स का कोड लिख दिया. He thought कि instead of commercially selling it, it would be the best to put it on cloud so that बाकी के लोग आएंगे और उस कोड को कंट्रीब्यूट करेंगे. सो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आर दोज प्रोजेक्ट्स जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिनका कोड ओपन सोर्स है. Now what why Red Hat is an open source company is because हमारे सारे projects open source है. Whatever we work on is, मतलब हम अगर कोई फीचर डेवलप करते हैं तो हम ऐसे नहीं करते कि खुद ही भेज देते हैं उसको, वो फीचर पब्लिकली अवेलेबल कर देते हैं so that anyone can get that feature or pull that code. So how do you go or search for an open source community? It depends on two things. Number one thing is what do you want to contribute to, ठीक है. वेदर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, यू कैन कंट्रीब्यूट इन डिज़ाइन, यू कैन कंट्रीब्यूट इन डॉक रिव्यू, यू कैन कंट्रीब्यूट इन कोड रिव्यू. पहले ये फिक्स करो कि कंट्रीब्यूट किस में करना है. एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करना है, डेव के प्रोजेक्ट ये वेब में करना है, मशीन लर्निंग करना है. वंस दैट इज डन, गो टू गिटहब,
गिटहब एक वेबसाइट है जिसपे सब कोड आएगा आपका. गो टू गिटहब, सर्च फॉर दीज टेक्नोलॉजीज, फाइंड इन कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं विच सूट योर नीड्स. उसके बाद गो फॉर, उसमें इश्यूज करके एक टैब आता है, उसमें यू कैन सर्च फॉर बेस्ट फर्स्ट इश्यूज करके एक चीज़ होती है जिसमें कॉन्ट्रीब्यूट, ज्वाइन दैट कम्युनिटी. देयर वंस यू गेट ऑनबोर्डेड इनटू द कम्युनिटी, people will help you, people will onboard you, they'll guide you setup कैसे करना है, contribute कैसे करना है, and then start developing together. I hope I have answered your questions. Yes or no? किसे डाउट था ओपन सोर्स का? ओपन सोर्स वाले डाउट वालों को समझ गया होगा तो यस या नो बोल दो यार जल्दी से. यस, कूल प्रणव. और बोलो, और क्या डाउट है? लाइक यू सेड वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना हो तो जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करना होगा, तो HTML CSS करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा क्या? ना, विदाउट HTML CSS वेब डेवलपमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो वेब, देखो जल्दी से वेब डेवलपमेंट का ओवरऑल पाथ बता देता हूँ. ठीक है, स्टार्ट विद HTML, स्टार्ट विद CSS, स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट. तीनों थोड़ा थोड़ा पढ़ ले. ठीक है, पूरा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. रिएक्ट का एक कोर्स खरीद ले, मतलब पता होना चाहिए कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है. सिंपल यस और नो बोल जल्दी से. ठीक है, 3 चीज़ें कर ली, HTML CSS जावास्क्रिप्ट. उसके बाद क्या करना है? रिएक्ट का कोर्स करना है. देयर आर 2 थिंग्स ओवर हियर एज वेल. एक तो रिएक्ट कर सकते हैं, एंगुलर कर सकते हैं. आई वुड सजेस्ट एंगुलर मत करो, रिएक्ट करो. रिएक्ट का कोर्स आता है यूडेमी पे, गो फॉर दैट कोर्स. उसमें वो तेरे को पूरा अच्छे से सिखाएगा रिएक्ट कैसे करना है. तो जब तू वो रिएक्ट का कोर्स करेगा तो देख के कंफ्यूज नहीं होगा, तेरे को पता होगा कि लिख क्या रहा है जावास्क्रिप्ट में. तो इन दिस वे यू विल, सो वेब डी करना है तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, 4 थिंग्स. कूल. यस या नो? या हाँ ना बोल, समझाओगा तो हाँ बोलते, नहीं समझाओगा तो ना बोल, वापस से समझाता हूँ. समझ गया. समझ गया, चलो और बताओ. पूछो यार, पूछो. सीरियसली डाउट्स पूछो. यस प्रहलाद. Actually, I have my doubt. As I introduced myself, I'm from third year, right? So I'm currently working in Java, like Android development in Java and Kotlin. ठीक है. But searching for internships, like stipend internships on LinkedIn, and वहाँ पे I got the notifications, like mail पे directly हर दिन notification आता है. But the thing is कि वहाँ देख रहा हूँ ना आजकल फ्लटर का ज्यादा ये है कि उनकी requirements में फ्लटर ज्यादा है. And then should I focus more on completely making good projects in Java Kotlin, or should I now switch to Flutter as well, like वो भी सीख लूँ? So what to do now, like current since I come from the Android background, I'll be the best person to tell this to you. Flutter सीख ले, Flutter is the future. ठीक है, because of हो क्या रहा है, Kotlin Java is like the old fashioned और the very जहाँ पे आप इंटरफेस के मतलब फ़ोन के साथ या फिर सिस्टम के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो. सो दोज थिंग्स, व्हाट माय प्रेडिक्शन इज, फ्यूचर में आगे जाके एंड्रॉयड का जो भी UI होगा दैट विल ऑल बी फ्लटर बेस्ड. जो भी उनको बैकएंड के लिए चाहिए होगा या फिर जो भी उन्हें सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना होगा, ब्लूटूथ के साथ, कैमरा के साथ, एट दैट टाइम दे शिफ्ट टू जावा और कॉटलिन. ठीक है, तो शिफ्ट लाइक लर्न दैट सिंस यू ऑलरेडी नो एंड्रॉयड, जावा कॉटलिन आता है. फ्लटर सीखना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो फ्लटर जल्दी से सीख ले. 1 आध महीना तेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा फ्लटर सीखने में. And then since you already know Java and you have also learned Flutter, you would be open to Flutter developer roles as well. And since you already know Java, you will also be open to the Java backend roles in the product based company. जैसे मैं अब खुद Java और Quarkus पे काम करता. I was a Flutter developer earlier. So that will give you an added advantage wherein you can apply to both these streams. Thank you. Like it was actually very nervousness for me because third year पे आके कोई एक नई language सीखना, because yeah, I do understand कि जिस domain पे हर दिन कुछ ना कुछ नया आते रहता है. So Flutter is something I think I need to get started. Flutter is not very पहले Android आता है तो Flutter सीख ले Flutter. Okay. Yep. चलो और बोलो. जो भी डाउट है, सिली से सिली डाउट पूछ लो. DS क्या होता है, कोडिंग करते कैसे हैं, कुछ भी होगा पूछ लो.
So, I have a doubt that what are the common mistakes that students make while applying in this product-based company, and what we should do देखो to avoid them? देखो सबसे पहले कॉमन मिस्टेक ये है कि रिज्यूमे ढंग का नहीं होता, ठीक है। मैं तो गंदे गंदे रिज्यूमे रिजेक्ट मारता हूँ। पहले चीज़, फर्स्ट थिंग इज कॉमन मिस्टेक इज, फर्स्ट थिंग रिज्यूमे इज नॉट गुड। सेकेंड थिंग इज resume is not particularly tailored for that one particular company. So if the job role says machine learning intern, I should not highlight my Android projects, right? I should highlight my machine learning projects. So that is the second thing that I feel. थर्ड थिंग, रेफरल के थ्रू नहीं आते, रेफरल के थ्रू आना चाहिए। फोर्थ थिंग, कंपनी का रिसर्च करके नहीं आते हैं, और जॉब रोल का रिसर्च करके नहीं आते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए। दैट इज लाइक नॉट अ गुड थिंग। You should learn about the company before applying to any or before going for interview, let's say, वो आपको लर्न करना चाहिए। उसके बाद तो डीएस वगैरह, हाँ सबसे मेन चीज़ जो मैंने बच्चों को देखी, तो मैंने खुद इंटरव्यू में मतलब एज ए इंटरव्यूअर ऑब्जर्व किया है, बच्चों को कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो नहीं पता यार, ठीक है। when I give you a normal coding question, there is a particular process that is needed to be done to solve that coding question. डायरेक्ट जंप नहीं करना होता है उसको सॉल्व करने से पहले, पहले उसको एक डॉक में लिखना होता है कोडिंग क्वेश्चन का, टेस्ट केसेस डिफाइन करने होते हैं, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, उसको वहाँ पे कोड करना पड़ता है। ओनली आफ्टर द इंटरव्यू सेज कोड, देन ओनली यू कोड इट। ये बच्चों को नहीं पता, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दैट कि मेरे जो भी बच्चों के मैंने इंटरव्यूज लिए, किसी एक को भी अच्छे से कोडिंग करना नहीं आता, बहुत लाइट में कोडिंग कर रहे थे, नहीं होता है वैसे। सो दैट इज लाइक द मोस्ट important thing, like most mistake, that is the mistake which people make in product based companies. Product based companies में your coding question will define whether you will get in or not. So before coming on, practice how to solve a coding question in an interview. If yep, I guess those are the common mistakes. I guess I have some questions in chat as well. Will learning cloud technology really matter for freshers? No, it won't matter, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए क्लाउड की कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। एंड्रॉयड सीखो, वेब सीखो, एमएल सीखो, डिज़ाइन सीखो, क्लाउड की ज़रूरत नहीं है। वंस यू गो गेट इन, और वैसे भी क्लाउड के क्रेडिट्स कहाँ पे मिलने वाले तुम लोग। सो द बेस्ट थिंग इज़ अभी ये सब चीज़ सीखो, इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप में तुम्हारा इंटर्नशिप वाला तुमको सिखा देगा कि डिप्लॉय कैसे करते क्लाउड के ऊपर। नेक्स्ट थिंग, विल यू नेम सम वेबसाइट्स टू लर्न लैंग्वेज और स्किल्स? यस, सो सम वेबसाइट्स टू लर्न, देयर इज ओनली वन वेबसाइट, दैट इज यूडेमी। यूडेमी पे सब चीज़ मिलता है, 500 रुपये में सब कोर्सेस स्टार्ट टू एंड सिखा देंगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और एडिशनली ये सब लैंग्वेज और स्किल सीखने के लिए, अगर डीएसए सीखना है, यूट्यूब इज़ द बेस्ट थिंग। यूट्यूब हैज़ अ वेरी गुड डीएसए प्ले लिस्ट। वॉट माई मेंटर सेड टू मी वॉज, डोंट स्पेंड अ रुपी learning DSA from someone. If you feel you have that level where you can understand from videos, go to YouTube. YouTube has every single thing. 40, मैं अब देखता हूँ कि कुछ कोर्सेस 40 से 50 हज़ार रुपये लेते हैं बच्चों से डीएसए सिखाने के। मत करो, खुद से सीखो, ज़्यादा सीखोगे। सो यप, एंड आई गेस द मीटिंग चैट इज म्यूटेड, सो यू कैन आस्क, अनम्यूट कर दो मीटिंग चैट, पूछने दो क्वेश्चंस बच्चों को। पूछो क्वेश्चन। सॉरी, एक एक करके। ओके, सो मीनवाइल मैं रोशन का क्वेश्चन लेता हूँ। सर, आई हैव डन 2 अनपेड इंटर्नशिप्स नॉट फ्रॉम अ वेरी, ये देव 10 मिनट रुकना, देंगे सब फीडबैक तो। सर, आई हैव डन 2 अनपेड इंटर्नशिप्स नॉट फ्रॉम अ वेरी नोन कंपनी, शुड इंक्लूड में? डेफिनेटली यस, क्यों नहीं डालना है, करे किए ना इंटर्नशिप्स तूने, डाल देना रिज्यूमे में। कुछ काम नहीं किया होगा, काम किया ही होगा तूने उसमें। पेड या देख, रिज्यूमे में ये नहीं लिखना है तुम लोग को कि इंटर्नशिप पेड थी अनपेड थी। इंटर्नशिप की थी ना, काम किया था ना उसमें, डालो फिर, ठीक है। प्राजक्ता आस्क, कैन यू टेल अ पाथवे फॉर मशीन लर्निंग? या, मशीन लर्निंग का पाथवे क्या है? सबसे पहले स्टार्ट विद पाइथन। पाइथन इज द लैंग्वेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मशीन लर्निंग। उसके बाद एक मैं सजेस्ट नहीं करो, फिर डायरेक्टली यूडेमी का एक कोर्स है जो मैंने किया था मशीन लर्निंग के लिए। डू एनी कोर्स फ्रॉम यूडेमी ऑन मशीन लर्निंग, दैट विल गिव यू अ आइडिया ऑफ हाउ टू टेक दैट डेटा सेट, कैसे लाते हैं, रन कैसे करते हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद एक एंड्रयू हिल का एक, कोई तो हिल है, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा,
उसका एक यूट्यूब पे पूरा का पूरा एक सीरीज है जिसमें उसने लीनियर रिग्रेशन जिसमें थर्ड पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिक्स ऑफ इट. So that is the third part. And then fourth thing is do some projects on it. Take some databases, analyze it, solve problems by using machine learning. सबसे best thing to practice machine learning is hackathons में जाओ. Hackathon के maximum problem statements are machine learning based. So therein you will get those problem statements to practice your machine learning skills. Yep, Prajakta, that's it from my side. Yes. और बोलो. और डाउट्स बताओ. So no doubts. I'll wait for a minute. कुछ भी होगा पूछो रे, कुछ भी होगा. डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कौन से पढ़ने हैं? यस, बोलो. Ashutosh, I'm not able to hear you. Sorry? Yeah, sorry. Yeah. Anyone else? और कोई डाउट्स है? I guess then. Yes. I'll ask my last doubt. मैंने previously भी हमारा ट्रेनिंग भी चालू रहता है थर्ड ईयर में एंड सो आई हैव अटेंडेड अ लॉट ऑफ सेशंस वेयर दे टीच यू अबाउट हाउ टू बिल्ड अ गुड रेज्यूमे एंड 2-3 सेशंस किए तो 2-3 सेशंस में उनके ना फॉर्मेट अलग अलग होते हैं लाइक डिजाइन में भी किन चीजों को ऊपर नीचे रखते हैं. अगर उन्होंने बोला कि आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे तो उसको ऊपर रखो, या अगर उन्होंने फिर मैं दूसरे सेशन में गया तो उन्होंने इंटर्नशिप्स या जो रखे थे. सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि एक कोई सैंपल रिज्यूमे जो तुम शेयर कर सकते हो विद अस सो दैट यू नो आई जस्ट वांट टू नो द फॉर्मेट कि किस फॉर्मेट में रखे जिससे कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े इंटरव्यू. देखो, what I feel is there is no good format for resume. Every format works unless it satisfies the purpose of creating an impact. तो ऐसे कुछ फॉर्मेट से फ़र्क नहीं पड़ता है. फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका सेक्शन कैसा है. ठीक है. अब लाइक इफ़ यू कम टू मी फॉर दी सेशन आई एग्जैक्टली टेल यू कि सो व्हाट आई डू इज आई लुक एट योर रेज्यूमे एंड टेल यू कि कहाँ पे क्या मिसिंग है, कौन सा सेक्शन नीचे ऊपर ये सब होना चाहिए. ठीक है. तो रेज्यूमे के लिए कम टू मी, आई टेल यू एग्जैक्टली कि आपके रेज्यूमे में क्या चाहिए वैसे. But for like any sample resume, I generally don't share resume because resume is like very personal, and I would advise to all of you as well. अपना resume अपने पास रखो. एक बार मैंने गलती की थी, मैंने एक दोस्त को मेरा resume भेज दिया था, बाकी 5 दोस्तों ने सेम फॉर्मेट में resume बना दिया था. तो अपने resume अपने पास रखो, किसी को भेजो मत. Okay. You on LinkedIn then? Yep. Okay. LinkedIn. Top mate would be better. Okay. Okay, cool. Next is Roshan. Sir, my question is on DSA. Is there any specific resource we need to follow like those SD sheets to stay consistent? Yep. तो क्या करना है DSA सीखने के लिए? जो मैंने किया था, लैंग्वेज पक्की कर ली, डन. सेकेंड थिंग, अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ DSA जो कॉलेज में सिखाएंगे. मेरे को ऐसा लग रहा है एक बार DSA की थियरी पढ़ ली. थर्ड थिंग इज वो जो DSA शीट है, एक DSA शीट जो मैंने फॉलो की थी दैट वाज लव बाबर्स 450 DSA क्वेश्चंस वाला. उसमें टॉपिक वाइज लव बाबर ने हर टॉपिक के ऊपर DSA क्वेश्चंस बोले. सो व्हाट यू डू इज वंस यू आर डन विद दोज ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स, वन बाय वन उन शीट्स में जाओ, एक एक करके उसके क्वेश्चंस देखो और वो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो. नहीं हुआ क्वेश्चन सॉल्व तो फिर यूट्यूब पे जाओ, उसका वीडियो देखो, समझो, वापस से जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, डन. और किस पे करना है ये सब? लीड कोड पे. कैन यू टेल अ पाथवे फॉर ऐप डेवलपमेंट? ऐप डेवलपमेंट के लिए क्या करना है? सबसे पहले स्टार्ट विद जावा के बाद एक ऐप डेवलपमेंट का कोर्स कर लो यूडेमी पे. वंस यू अंडरस्टैंड द जावा बेस्ड ऐप डेवलपमेंट देन गो फॉर फ्लटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट फ्लटर देयर वोंट बी एनी ऐप डेवलपमेंट फ्रॉम नाउ ऑन. यप. देवेंद्र रुकना जरा 10 मिनट, भरेंगे सब फीडबैक, मत टेंशन ले, अच्छे बच्चे. I guess that's it from my side then. Thank you very much, guys. You have been a very patient audience. You stayed until the end. If there is anything, I hope I was able to add value to your life out of these 1.5 hour Thank you, session. sir. I have one question. Yes, पूछना.
तो लिंक्डइन कितना इम्पोर्टेंट है एक अच्छी जॉब या फिर एक प्रोजेक्ट लैंड करने के लिए? लिंक्डइन, हम्म, अब मेरे को एक बात बता, तूने मेरा इंट्रोडक्शन कहाँ से लिया था? ऑब्वियसली अपन मिले थे डेफिस में। ये जो अच्छा, इंट्रोडक्शन, राइट हाँ, राइट, इट्स फ्रॉम लिंक्डइन। दैट आंसर्स द क्वेश्चन. क्या हो गया? Yep. So, ओके, so the main thing, अगर आप में से किसी को भी लग रहा है कि I could improve this session in some way, message me on LinkedIn, बताओ where I went wrong, where I could have been better. तो रीजन बीइंग दिस आज क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछा, क्योंकि आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट हैव प्रॉपर लिंक्डइन प्रोफाइल. They don't have related bio, well written bio. They don't have added any experiences, volunteer experiences, and that should really matters in the form of landing good job, right? देख, लिंक्डइन कब मैटर करता है पता है क्या? रिक्रूटर के लिए लिंक्डइन मैटर करता है, बिकॉज वो ना तेरा लिंक्डइन जाके देखेगा और फिर तेरे को हायर करेगा. मतलब रिज्यूमे देखेगा, लिंक्डइन देखेगा और फिर ये पढ़ेगा. मैं किसी भी आदमी को पहले लिंक्डइन देखता हूँ और फिर उसको जज करता हूँ, ठीक है? तो लिंक्डइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी. लिंक्डइन इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू अपडेट और टू लर्न. कैसे अच्छी प्रोफाइल लिंक्डइन की क्या होती है, कैसे पता चलेगा? देखो 4 लोगों के प्रोफाइल, फ्री है, देखना, कर लो कॉपी पेस्ट इधर से उधर, क्या फ़र्क पड़ता है, किसको पता चलने वाला है? 4 लोग अच्छे पकड़ लो जिनको लगता है कि लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे है, देखो उन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा. मैंने मेरा लिंक्डइन ऐसे अपडेट किया. आई हैड माई पर्सन्स इन माइंड, जिनका लिंक्डइन चेक करता रहता था, इसने क्या किया है, इसने कैसे एक्सपीरियंस डाला है, इसने कैसे बायो लिखा है, इसने प्रोफाइल पिक कौन सी रखी है, वो सब चीज़ें. Yep. Cool then guys, मुझे लगता है सब लोगों के क्वेश्चंस एंड हो गए, एंड शार्दुल हैज डिलीवर्ड द वेरी गुड सेशन. Thank you so much, Shardul, for coming and sharing your experience, valuable experience with us. And that being said, we'll wrap up with the session. Thank you so much, everyone, to whoever joined and till last with us. And please fill the feedback form in order to get your certification about this session. So whoever is filling the feedback form, only those people is getting the certificate from us, a Microsoft certificate from us. And yeah, we'll see you soon. And thank you so much, guys. Yeah, bye bye. Take care. Bye. फोटो नहीं करा क्या देव तूने?